खुलुमबाय सर सर त्रिपुरानि उन्दै मीडिया टीम और नौनी दिमासाव फाइसे बजा करीमगंज और नि बुशु फेस्टिवल मंगनाने बाजे सर नना हम लाम सुगो चिनी कोग लामो सर खरामनी न याक्सले चोबा विपिन चोबा बाय न और ऐसे लीडरशिप न सामु तांखा ताबुशुक जरा ऐसे सिले चोबा तुये खाइथने नंता बुथाइ मनखा ते जब अभी तक आपने जो भी हथियार का लेके हाथ में हथियार लेके जो भी फाइट किया है उस फाइट का रिजल्ट क्या हुआ है और अभी आप क्या कर रहे हो? थैंक यू। हम लोग हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम था दिमा हलम डोंगा। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ स्ट्रगल किया डेमोक्रेटिकली नॉन डेमोक्रेटिकली। फाइनली नॉन डेमोक्रेटिक स्ट्रगल किया तो हम लोग स्ट्रगल किया फॉर द क्रिएशन ऑफ सेपरेट डेमोक्रेटिक स्टेट विद इन इंडियन यूनियन। तो उसका ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात हुआ, सीजफायर हुआ। लॉन्ग 10 years वी वर इन पीस टॉक। तो 2012 का 8 अक्टूबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम और हम लोग का 2 ऑर्गेनाइजेशन दिमा हलम राव का 2 ब्रदर्स साइन हुआ दिल्ली में। उसका बाद में हम लोग का जो है अभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लग रहा है। तो साथ साथ द दिमासास लिविंग आउटसाइड दिमासाव द 6 शेड्यूल एरिया, तो ये कछर, करीमगंज, हाइलाकांदी, नौगांव हो जाए, आउटसाइड दिमासाव डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लोग एक डेवलपमेंट काउंसिल भी एग्रीमेंट में है। तो उसको क्रिएट भी हो गया, उसका बर्मन दिमासा कचहरी डेवलपमेंट काउंसिल बोलता है, अभी फॉर्मेशन हो गया। तो वही एक तो स्टेप है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ द दिमासा कचहरी लिविंग आउटसाइड दिमासा डिस्ट्रिक्ट विद आउटसाइड 6 शेड्यूल एरिया। तो इसका साथ हम लोग का जो रिहेबिलिटेशन गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए था, वो रिहेबिलिटेशन अच्छा से नहीं हुआ, पर फिर भी हम अपने से कर रहे हैं और गवर्नमेंट को हम लोग अपील भी कर रहा है। तो सो इज टू इम्प्लीमेंट ऑल द क्लोजेस मेंशन इन द कोर्ट्स। तो इसलिए अभी तक का जो हम लोग डेमोक्रेटिक मीन्स से भी हम लोग का जो मांग है सेपरेट स्टेट का डेमोक्रेटिक मीन्स हम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ असम भी जो डेमोक्रेटिक मीन्स का स्टेप जो है वेलकम करते हैं। तो साथ साथ उसके बीच में हम लोग since we have been struggling for the protection and for our existence, so we are involving in this type of cultural protection and language protection, upgradation of our people. So right now myself we are here in Karimganjni district bordering Tripura और मिजोरम। तो हमें विश्व दिमा फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज किया ऑल दिमासा स्टूडेंट यूनियन करीमगंज डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने। तो यहाँ में आया है और यहाँ का जो हमारा लोकल ट्राइबल पीपल का जो इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन बहुत ख़राब है। तो इसके लिए जानकारी मिला और गवर्नमेंट से हमको यही बोलना है कि ये ट्राइबल नॉन ट्राइबल के बात नहीं होके जो ट्राइबल लोगों का हो, जो भी हो, फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए, पॉलिटिकल सेफगार्ड होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग का ये फेस्टिवल का जरिए हम लोग यूनाइटेड अपने आदमी को करना चाहते हैं। सर यहाँ पे आने के बाद पता चला है कि ये जो एरिया है वो रिजर्व है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, ऐसा क्यों क्या जा रहा है सर? ये फॉरेस्ट विलेज है। तो कछार में हमारा जो कछार वाज प्रिंसली स्टेट बिफोर द एनेक्सेशन इन ब्रिटिश एम्पायर इन 1824 6 March there was signed a treaty in between the last king Raja Gobind Chandra and the British Commissioner David Scott at Badarpur, the present Badarpur. उसका बाद में जो राजा एज पर द डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स हमारा राज ब्रिटिश में मार्च हो गया। उसका बाद में हम लोग का सब स्केटर्ड हो गया। अच्छा आवर किंगडम डिवाइडेड इनटू मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम एंड इन दिमापुर नागालैंड। तो और यहाँ का जो हम लोग का सब्जेक्ट्स ऑफ द कछारी किंगडम, नॉट ओनली दिमासास, नॉट ओनली द बर्मन्स, the other subjects, other speaking also, they have been facing political, social, economic problems. और साथ साथ ये जो है अभी कलाहवर, जीरीघाट और ये जो आपका करीमगंज त्रिपुरा बॉर्डर, इसी इलाका में
हम लोग का लैंड राइट नहीं मिल रहा है कि इसको रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है। और साथ रिजर्व विलेज, रिजर्व फॉरेस्ट विलेज होने से हुए हम लोग का फंडामेंटल राइट एंजॉय करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंजॉय करने का मौका नहीं मिलता है, डॉक्यूमेंट का जरूरी होता है। इसलिए गवर्नमेंट को हम लोग मांग करते हैं कि so as to protect our people economically, socially, culturally, तो इसके लिए हम लोग का मांग भी है, इसको डी रिजर्व किया जाए। सर यहाँ पे आने के बाद ये भी पता चला है कि यहाँ का जितना भी ट्रेडिशनल कपड़े वगैरह है सब कुछ मतलब दूसरों की मतलब अपना कल्चर, अपना खान पान, अपना पहनवा सब कुछ छोड़ना पड़ा। यही तक नहीं है पर टाइटल भी छोड़ना पड़ा। क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे? दिस इज द कंडीशन, दिस इज द पोजिशन व्हाई वी हैव बीन स्ट्रगलिंग for the protection, for the existence of our people. As soon as our kings or the kingdom annexed with the British Empire, Indian movement started, India became independent, and within the Indian democratic country, India is popular as a world's largest democratic and acceptable constitution in the world. But still, this best constitution in the world divided our people into many names, such as Bormon, such as Kachari, such as Hojai, such as Dimasa. In Nagaland they are known as Kachari. In hills area in Assam they are Dimasa Kachari. In plain district here in Karimganjni, Hailakandi they are known as Bormon. In other Brahmaputra they are known as Hojai. This is the discrimination, and we want united. We want our same speaking people, that we have been practicing same culture, language. But why we are discriminated by the ruling dynasty? So ruling dynasty means ruling democratic government. So we want, and we have been asking, we have been struggling that government should know our conditions. And now you have already mentioned that our language, our culture, our attires, our dresses, all becoming what to say, they don't know themselves that who we are. That's why we have been organizing so as to bring awareness among our people that who we were and who we are and who we will be in future. That is why economically, socially, we are trying to bring awareness. And even you already mentioned that a positive word, that we have forgotten our own titles also. Here this family belongs to Bindosa, but they don't know their own title. But the old man, 85-year-old, he said that we are a Bindosa. Bindosa, that Bodosa also. So this is our tragedy, that here in Hindu country, we claim that we are Hindu, but the Hindu people in Hindu majority, the Hindus also discriminated, because in democratic country, those who are the majority, they enjoy the most, and those who we may be the Hindu, but still we are minority speaking, so we are neglected here. नोटिस की जितने भी नागरिक हैं, 12% इंडिजिनियस पीपल को क्यों अपना हक के लिए, अपने डिमांड्स के लिए लड़ाई करना पड़ता है सर? क्योंकि मतलब Indian government, the democratic government elected by the people, for the people, of the people, and that is the elected members elected by the majority people, and those who are minority, they cannot elect their representative to the assembly, to the parliament, to the council, and whoever elected by that majority people, the elected member never look after the minority people. That's why the minority becomes backward. They are not uncivilized. They are economically backward because of they are depriving their own facilities, fundamental rights, constitutional rights. That's why they are backward. Right now, since we have no any facilities to enjoy our culture, language, to develop our everything, and government, the majority people dominated. So what happened? Result is that the minority tribal or the indigenous people, their cultures becoming to ruin day by day, and finally the indigenous people, they are becoming minority, and their culture and language slowly, since the majority government never encouraged them to protect their culture and language, slowly this is the process how to ruin their culture and languages. Sir,
फरवरी 28 को त्रिपुरा का बुबाग्रा प्रदर्शन मणि का देवपुर में हंगर स्ट्राइक का कॉल किया है। क्या बोलना चाहेंगे बुबाग्रा का ये जो हंगर स्ट्राइक है कितनी फुलफिल होगा, क्या होगा आपका रिएक्शन सर? बुबाग्रा मानिक से मैं लास्ट 2008 में मिला। हमारा आसाम का नौगांव डिस्ट्रिक्ट कानपुर में आए थे, तो लास्ट किंग जो तुलाराम सेनापति का द ग्रेट ग्रैंडसन से दोनों से मिलाया। उसी में वो आया, हमारा इशू का ऊपर में बोला, हमारा प्रॉब्लम का ऊपर में बोला। उनको हम सब वेलकम भी किया, मैं ट्रेन में भी गया। और उनका जो मांग है जो इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा के लिए, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको मतलब कंसिडर करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका ऊपर एनालिस करना चाहिए। एंड व्हाट एवर recorded in the merger accord by treaty in between the Tripura Swkwlwk kingdom and the government of India in 1948. As per the accord or treaty of the Tripura king and the government of India, the problem of that Twiprasarog people should be solved. And once more, since the government is neglecting the problems of the Twiprasarog, that is why the Twiprasarog youths, educated, non-educated, they have been taking up the arms, and they are welcoming the arms struggle only. And the result, what happens, some killing, everything going on. And so as to stop the arms struggle, and the government of India, government of Tripura, and the intellectual people of Twiprasarog should analyze among themselves how to solve the Twiprasarog issue. And I think that all the Twiprasarog should welcome, first of all, to welcome the arms revolutionary groups to come forward so as to accept the pain and fight for the Tripuris democratically, since the government of India is only welcoming the democratic movement. So I once again appeal the government of India that United Twiprasarog Arms Revolutionary Group should come forward. Maybe LLFT, maybe ATTF, maybe others group, and our Bubagrani also should welcome all the groups, and the government of India should not neglect small groups also, because everybody knows that a little drops of water makes a mighty ocean. So should not let all the small groups also and try to bring together and solve the Twiprasarog issue permanently. And on behalf of the Dimasa community and the Bishu community here, I wish Bubagrani a successful movement, and I respect the democratic movement taken by the Bubagrani. आप क्या बुबाग्रा का इस संघर्ष को सपोर्ट करते हो? हाँ, सिंस ये तो मतलब डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, मैं नहीं है, हम सपोर्ट करते हैं। और एज ए सब्जेक्ट्स ऑफ Swkwlwk कचारी किंगडम, वी सपोर्ट the Bubagrani movement, who was the royal family and now also a member of the royal family, and he believes that how to lead the royal family members. And the government of India, though the Tripura kingdom is no more here, but still the government of India should respect the royal family and should respect the protection of the culture and language of the tribal people living in Tripura. As you have said, many revolution groups, to protect their identity, to protect their culture, to protect the people, they have carried the arms. But do you think, after leaving the arms and now coming to democratic, do you think that the indigenous people will get a freedom? Though we have come up and accepted the pain, but still the government all the time talking about peace, but until and unless the willpower not in the hands of the governing leadership, the peace won't be possible. The willingness, because of lack of willingness of the governing leadership, the accord signed with numbers of revolutionary groups yet to be implemented. That's why the problem. See the Laldanga issue, see the Assam Accord, see the TNB Accord, see the 1976 Naga Accord, and see myself we have signed in the year of 2012 to yet to be implemented. So that's why I'm asking, we are trying
before the government. We were praying before the government that you better to implement, otherwise, like a Muslim, the youths are coming to join another groups, accepting the arms also. It is happening in other places in our land. Not only in our land, all over Northeast, all over the world, this culture is going on, and we cannot stop the arms culture also, because if government wants to stop the arms culture, then government should be very much careful so as to implement it. So do you think that government of India is neglecting the indigenous people? Neglecting, that is, if the government is always trying to implement delaying all the issues, Only giving date and date. only they are giving the time and date, tomorrow, day after tomorrow, this month, next month. So this is delaying means denying the justice. This is the point. So from Northeast, the Northeast indigenous farmers there, Tripura's indigenous farmers there, they are all together coming to fight democratically so as to solve the indigenous people's issues and problems. So do you think the Northeast, the seven sisters of indigenous people of the soil, of the land of the soil, so do you think we should unite in this time? For an example, now it is happening in Manipur. So do you think that we Northeast should be united and go for a demand? Do you think? What will be the reaction? Everybody has a different issues. Somebody political subject, somebody language issue, culture issues. There are many different issues with the different communities. So if we are united and pressurize the government together, there is a 100% possibilities the government of India will listen the grievances placed by the indigenous people of Northeast. This is my view, sir. Okay. Sir, your name please? My name is Dilip Nunisa, and I was the chairman of Dimahalam Dauga, and now our civil organization is Halali Progressive Welfare Society. Head office is Haflong, Dimahasau district, Assam. Okay, sir, yes, we are from Tripura and our viewers also watching your news. So what will be your message to Tripura, to the people of Tripura? Our message is that the government of India should listen the grievances placed by the Twiprasarog people, and the Twiprasarog brothers also should go together and fight together democratically till we reach the goal and we achieve our all the problems solved together and live peacefully, and so we should believe in peaceful coexistence with all the communities. This is my message to Tripura brothers.